Hello, students. At the outset, I would like to thank you for your love and your affection. My dear students, in this video, we shall discuss national development. National development is a comprehensive term which includes improvement in living standard of the people, increase in per capita income, providing social amenities like education, medical care, social services, etc. to the citizen of the country. My dear students, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका सभी का विकास हो, उनका जो जीवन स्तर है उसमें डेवलपमेंट हो और उसके जो प्रत्येक व्यक्ति के जो इनकम है उसमें इनकम में बढ़ावा हो और सभी के हेल्थ केयर अच्छा हो, उसमें सारी सुविधाएं उनको प्राप्त हो हेल्थ केयर, और उसके अलावा उनके सामाजिक जो सर्विसेज हैं और एजुकेशन है उसमें डेवलपमेंट हो। इसी को हम एक नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स they could have similarities as well as differences. Which aspect do we use to compare them? Let us look at the students in class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talent, and interest. The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent students may not be the friendliest. So, how do we compare the students? The criterion we may use depend on the purpose of comparison. We use different criterion to choose a sport team, debate team, music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criterion for the all-round progress of the children in the class, how shall we do it? Usually, we take one or more important characteristics of the person and compare them based on these characteristics. हम बच्चों में और इम्पोर्टेंट उनके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जैसे फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी एंड मार्क सिक्योर. For comparing countries, their incomes is considered to be the most important attribute. We think that countries with higher income are more developed than others with less income. The income of the country is the income of all the residents of country. This gives us the total income of the country. For comparison between countries, total income is not such an useful measure, since countries have different population. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. क्या लोग एक देश में दूसरे देशों से समृद्ध हैं? इसको समझने के लिए हम एवरेज निकालते हैं. Average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. In World Development Report 2006, brought out by the World Bank, countries with per capita income of rupees 4,53,000 per annum and above in 2004 are called rich countries, and those with per capita income of rupees
37,000 or less are called low income countries. India comes in the categories of low income because its per capita income in 2004 was just rupees 28,000 per annum. While averages are useful for comparison, they also hide disparities. एवरेज कंपैरिजन के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन वह असमानता को छिपाता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर टू कंट्रीज ए एंड बी. For the sake of simplicity, we have assumed that they have only 5 citizens each. Both the countries A and B have identical average income. Country A has more equitable distribution. In this country, people are neither very rich nor extremely poor. On the other hand, most citizens in country B are poor and one person is extremely rich. इसको और समझने के लिए हम एक पिक्चर देखते हैं. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 4 चेयर लगी है, उस पर 5 व्यक्ति तर्कसंगत रूप से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है चेयर का. और राइट हैंड साइड में हम देखते हैं कि जो 4 चेयर है उस पर केवल एक ही व्यक्ति और 2 चेयर पर 4 जने बैठे हुए हैं. इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो उसको तर्कसंगत रूप से चेयर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, यानी सभी लोग बराबर हैं. लेकिन राइट हैंड साइड पर आप देखते हैं कि एक ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा चेयर लिए हुए है, यानी डिस्पैरिटी है. यहाँ पर असमानता है और यहाँ 4 जो लोग हैं वो केवल 2 ही चेयर पर बैठे हैं, यानी बराबर नहीं है. तो हम कह सकते हैं हैंस while average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is distributed among people. Income and other criteria. Let us examine this through an example. Table 1.3 gives the per capita income of Punjab, Kerala and Bihar. Punjab has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on an average, a person in Punjab earned rupees 26,000 in 1 year, whereas on an average, a person in Bihar would earn only around rupees 5,500. So, if per capita income were to be used as the measure of development, Punjab will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the 3. Now, let us look at the certain other data pertaining to these states given in table 1.4. The first column of the table shows that in Kerala, out of 1,000 children born alive, 11 died before completing 1 year of age. But in Punjab, the proportion of children dying within 1 year of birth is 49, which is nearly 5 times more. On other hand, the per capita income of Punjab is much more than Kerala as shown in table 1.3. The problem does not end with infant mortality rate. The red column shows that more than half of the children in Bihar do not even get to go to school. This means that if you went to school in Bihar,
more than half of your class would be missing. Those who could have been in school are not there. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. My dear student, अच्छा रहने के लिए पैसे से ही हम गुड्स और सर्विसेज नहीं खरीद सकते हैं, हमें और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, योर मनी कैन नॉट बाय यू ए पोल्यूशन फ्री environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to ship to community that already has these things. और हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि हम बिना मिलावट की दवाइयाँ प्राप्त करते हैं जब तक कि हम किसी कम्युनिटी से शिफ्ट नहीं होते हैं जो उनके पास ऑलरेडी है. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community take preventive steps. हम किसी संक्रामक रोगों से भी बच नहीं सकते, वो हमें मनी पैसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है जब तक कि हम पूरी जो कम्युनिटी है वो एक प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लेती है. केरला में एवरेज पर्सन की इनकम से ज़्यादा पंजाब में एवरेज पर्सन की इनकम ज़्यादा है. फिर भी पंजाब पीछे छूटा हुआ है. केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़. केरला के बच्चों की मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ का जो स्वास्थ्य है और एजुकेशनल फैसिलिटी अच्छी है. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Sustainable means continue. The efficient utilization of resources not only for present but for the future generation also is known as sustainable development. ऐसे resources जो केवल प्रेजेंट में ही हम उसको कुशलतापूर्वक यूज़ करें बल्कि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका पूरा लाभ उठा सके. फॉर एग्जाम्पल, कोल एंड पेट्रोल, दीज रिसोर्सेस आर लिमिटेड. एक दिन उन्हें खत्म होना है, इसीलिए हम उसको इस कुशलतापूर्वक उसका उपयोग करें ताकि हम भी उसका लाभ उठा सके और आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसका लाभ उठा सके. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.